Hello and namaste everyone. I'm Monica. Welcome back to the channel that is Moni Super Classes. So I'm back with you with a new topic, that is a contract posting series that I've started. This is the day 5th, one day one concept series. And yes, if you are new to the channel, please subscribe to the channel, click the bell icon, and please do like our Facebook page. I will give the link in the description box. And yes, explanation of the video will be available in both Hindi and English. What I will do, I will give the timestamp in the description box. You just go to the description box, check the timestamp of Hindi and English explanation and start watching the video in whichever language you are comfortable with. So मैं क्या करूँगी, हिंदी और इंग्लिश का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक्सप्लेनेशन, वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखना स्टार्ट कर सकते हैं. Yes, so starting with the practical problem, what you can do, just pause the video, read by yourself, and I will also read for you. But yes, see, there's a little skeptical things going on. We don't know whether the OB exam will happen or not, but I'm keeping my promise. So yes, question number this, the practical problem. Okay, this problem is from the contract costing. So X Limited has undertaken the construction of a road and the value of the contract is 15 lakh, subject to retention of 20% until 1 year after certify completion of the contract and final approval of the engineer. The following are the details shown in the books of account 30 September 2014. So these are the following details that is there we need to encounter while preparing the various account that is being asked in the question. You will getting know later in the video. So later, yes, the labor on the site is 4,05,000, material direct to sites 4,20,000, material from store 81,200, hire and use of plants 12,100, direct expenses 23,000, general overhead allocated to the contract is 37,100, and material on hand on 31st September is 6,300. Continue from the first slide. I hope this is under the frame. Let me check. Yes, it is. Wages accrued on 30th September 2014. 30 September 2014, that is 7,800, and direct expenses accrued on 30 September 2014 1,600. Work not get certified at go. So this is the uncertified work. Okay, work not certified, uncertified, same thing. 16,500, amount certified by engineer 11 lakh, and cash received from contractor 8,80,000. So we have to prepare contract account, contractor account, and the balance sheet extract. So these are the general thing that ask in examination. Our examiner ask you guys to prepare. So these three accounts will do one by one. So this is a specimen of the contract account. So let me just discuss. So these are debit side and credit side with you, that the whenever we prepare a contract account, so keep this thing in mind, consider yourself as a contractor. Okay, so we prepare this contract account to the point of view of the contractor. So debit side contain whatever we put into the contract, and credit side will contain whatever we get out of the contract. So put into the contract means debit side contain all the expenses, all the resources that the contractor gather or pool in order to execute the contract. Okay, so everything that expenses, the resources, whatever the contractor put into the contract, that is come the debit side, and whatever contract get out of the contract, it could be the income, it could be the gain, so that is, or the assets, okay, that is come under the credit side of the contract account. Okay, so yes, moving again on to the question. See, labor on the site is 4,05,000, and material direct to say site 4,20,000, material from stores 81,200. Did you see, these are the resources? So these are the resources that the contractor put into the contract. So these come under the debit side. From like direct expenses, these are expenses, debit side. General overhead allocated to the contract, these are everything like from here to this point, general overhead, these we consider the debit side. And the material on hand 31st September 2014 6,300. So material on hand, these are the asset, and we consider this the credit side of the contract account. Okay, consider as an asset. So I already write it down here. And one more thing, you have to mention that this is a contract account is from up to this and that date. So the date we should mention, like this is a contract account from the 30th September 2014. Make sure you do that.
I should change the color. Yes, let's just take a black one. From 31st September, 30th September 2014. Okay, whatever date that mentioned in your question, you have to write it there. And yes, work in progress. So this is the important section. Work in progress contain the certified work, uncertified work, and the third one, the escalation profit. So this is something not there in the question, but yes, certify, uncertified is there. So we put the amount. Okay, I'll take you back to the question to show, yes, these things. So whatever is given in the question, we just place everything the right side, the right one side, okay, in the contract account. Which details or which information or details, okay, must be shown to this contract account, we place everything. So let's just finding out. Okay, so this is like 11 lakh 16,500. Okay, so if I have to balance these, so there is a difference, deficit of the debit side. So let me tell you, if there is a deficit of the debit side, so the resultant would be the notional profit, and if the deficit or deficiency occur the credit side, so resultant would be the notional notional loss. Okay, so here let me change the pen, is like 11 lakh 22,800 or 11 lakh 22,800. Okay, so the deficiency is 1 lakh 35,000. This is a notional profit. Please do the calculation work by yourself. So what we have to do, we have to carry this forward to like by balance CD, changing the pen. By balance CD, that is a 1 lakh 35,000. Okay, so this 1 lakh 35,000 bifurcate into two slots. So some part of this we have to shown as a profit and loss account, and some part we have to shown in work in progress reserved account. Okay, please ignore the background noise. Profit and loss account, and some part of it as a VIP reserve, work in progress, the full form is VIP. Okay, so but now how to decide how much we need to include the to profit and loss account? For that I'll take you to the working note. So here we go, this is a working note. How to decide which portion we need to consider of the notional profit that should be there shown to the profit and loss account. So the formula is 1 lakh. Okay, so this is the notional profit, NP, into 2 by 3 into cash received in divided by this work certified. This is the formula. Okay, but how to decide that this 2 by 3rd should be there? So the criteria is, first we have to find out the degree of completion. Okay, degree of completion of work. So how to calculate? This is the formula. Work certified is 11 lakh and contract price is 15 lakh. Take you back to the question, you can check. So this is the contract price. 15 lakh is a contract price complete, and you can see subject to retention of 20% until the 1 year after certificate. So 20% must be there or retained by the contractee. If the contractor able to satisfy the contractee, that remaining 20% after the contractor will get. Okay, so here the somewhere around like 80% work certified and 20% is not certified. Out of this line, this can be the, this can, like, this is something you can write over here. So yes, so how to calculate degree of completion? You can see this is the cost price 15 lakh, and this is the
amount certify, like work certify, you have to find out the percentage of work certify. So put the work certify in a denominator and numerator, and the contract price in a denominator, and find this. So this is a 37.3%. This is a degree of completion. And you can see if your work is less than 20, if your work is less than 20, so then there is no degree of completion. Okay, no formula we can use. So, and if your work is somewhere around 50, 25 to 50, okay, 25 to 50, greater than and equal to 25 or less than 250, and this is the notional profit. I hope this is under the frame, and even if it is not, I'll write it down some place where it is visible to all of you. Yes. So yes, how to calculate this, how we derive this formula, that this formula should be used while calculating the perfect portion of profit and loss account. Okay, so notional profit. So this is the degree of completion. So if the degree of completion somewhere around 50 to 90, like greater than and equals to 50, okay, degree of completion, and but less than 90, less than 90 but greater than and equals to, and less than 90. So you can see this 73.3 percentage somewhere lies over here. So at the time of calculating the profit and loss account, this formula 2 by third notional profit into 2 by third into cash received divided by work in progress, this formula should be used. Okay, so and if suppose let's say if the profit is less than 25, less than 25, then no formula should be used while calculating the profit and loss account. And second, if the let's just suppose if the profit, like degree of completion, lies somewhere around greater than or equals to 25 but less than 50, so notional profit into 1 by third into cash received divided by work certified. So this formula is used. But in this case, as per this question situation, so we use the third one formula. Okay, and if the profit degree of completion is more than 90%, then some other formula will use. So yes, without wasting in time, I think you guys know we have to use this formula. Okay, and the reason is because of this degree of completion lies in between the 50% to 90%. So by using this formula, we'll get to know 72,000 is the amount that we should mention the profit and loss account. Okay, 72,000. Consider working note number 1. Okay, and then we have work in progress reserve. We can simply, arriving out the balancing figure, subtract 72,000 from 13 or 1,35,000. Yes, we have to subtract 72,000 from 1,35,000. So the resultant would be 63,000. 63,000. Yes, we are done with the contractor count. Moving on to the other two. These are the very easy as per the question. And yes, this is the contractee account, debit side and credit side. So in credit side, we encounter all the cash that a contractee receive. Okay, by cash account. So you can see, take you back to the question. It says cash received from contractor. Cash received from contractor. Okay, so 8,80,000. 8,80,000. Fine. So we must show over here 8,80,000. And this is to balance CD. The same amount, 8,80,000. And yes, we are done. We are done with this account.
Okay, moving on to the balance sheet exact. Just make sure, as the normal balance sheet we have to prepare this also, but this will not tally. The balance sheet of contract account will not tally, because this is an extract of balance sheet, not the exact balance sheet. Okay, but yes, we consider everything that we consider in an actual balance sheet, and but this is the extract one, so this will not tally. Accrued expenses. Accrued expenses is, did you remember? 78. Take you back to the question. See these last two, these are the accrued expenses. This one, direct expense. Oh yeah, these two. Overhead, where is accrued? No, these are not. That must have been a second. Yes, these two. Wages accrued and direct expenses. 7800 and 1600. We must be shown to the balance sheet. This is nothing but the cross posting. You can easily prepare this balance sheet extract. Simply go to the question and simply cross posting thing. You can easily pick out some item that you can exact take from the profit and loss account. Okay, of the question. So expenses accrued, wages is 7800, and the direct expenses 1600. And if I need to sum it up, it's 19,400. Okay, and next we have, yes, work in progress, certified, uncertified. Certified work is 11 lakh. Uncertified, that is something also given in your question, 16,500. Work in progress reserve. So work in progress reserved, we have to subtract in work in progress reserve. Just make sure, suppose the full form, like the once we added up the certified and uncertified, the amount somewhere around is 11 lakh 16,500. Okay, and work in progress reserve, this is something we have to subtract. So I'll make whatever we need to subtract from the work in progress, so I keep them in a bracket, easier to identify. So this thing, work in progress reserve, we need to subtract 63,000. Okay, and cash receive, yes, cash receive was 8,80,000. That is there at the last of the question. Okay, so once these two things we have to subtract, these thing we have to subtract, these thing, and this thing we have to add. So yes, once you done the little calculation, and please do check calculation by yourself maybe. So this is like 1,73,500. Okay, at last material in hand, that is the consider asset, and asset come to the asset side of the balance sheet account. Okay, and asset like material in hand is 6,300. That's it. We have to end this extract of balance sheet over here, because this will not tally. This will not tally. And one more thing, to profit and loss account. Change the color of the pen. Profit and loss account. Okay, that is something we must shown over here. That is a 72,000. Okay, 72,000, and reserve is shown over here. Okay, reserve we subtract from the work in progress here, and profit and loss account we shown over here, the reserve side of the balance sheet. So yes, we end our question over here, but let me take you back to the question again. So I am starting
Hindi explanation of this question in a very zip manner. So yes, I'm starting with the Hindi explanation. You can see this is the, ये जो question है ये कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग का है. यहाँ पर जो एक्स लिमिटेड है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 15 लाख है और जो रिटेंशन मनी है वो 20% है. अब आप देखो अगर 20% रिटेंशन मनी है तो 80% क्या है, 80% हमारा वर्क सर्टिफाई है और 20% जो है वर्क अनसर्टिफाई है. मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बाद में अमाउंट तब मिलेगी जब वो सेटिस्फाई कर देगा कॉन्ट्रैक्टी को. ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हैं इनको. लेबर ऑन साइट 4,05,000 रुपये, मटीरियल डायरेक्ट टू साइट 4,20,000 एंड मटीरियल फ्रॉम स्टोर 81,200, हायर एंड यूज ऑफ प्लांट 12,000 सो एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 23,000, जनरल ओवरहेड को 37,000 एंड सो, एंड मटीरियल ऑन हैंड 6300. और यहाँ पर जो वेजेस अक्रूड है वो 7,800 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,600 है, और वर्क सर्टिफाई 11 लाख है, अनसर्टिफाई 16,500 है. और ये जो कैश रिसीव है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट वापस करना पड़ेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर इज़ नॉट सेटिस्फाई विद द वर्क और द एग्जीक्यूशन वर्क दैट द कॉन्ट्रैक्टर डन. तो वो कुछ सेटिस्फाई नहीं है कॉन्ट्रैक्टी, तो कुछ अमाउंट उसको वापस करना पड़ेगा क्योंकि कुछ काम जो है अनसर्टिफाई है एज पर दी जो आर्किटेक्चर है कॉन्ट्रैक्टी का उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, काम नहीं अप टू द मार्क है, तो फिर वो जो अमाउंट वापस करनी पड़ी है कुछ 8,80,000 रुपये. ठीक है, अब जी हमें क्या बनाना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट यहाँ एक बात याद रखनी है, एक्सट्रैक्ट होता है, बैलेंस शीट मैच नहीं करती. जो रियल नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं होता एकदम वही है, लेकिन दिस इज द एक्सट्रैक्ट वन. तो यहाँ जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं, दिस इज समथिंग विल नॉट मैच, तो वो मैच नहीं करती है. देख लो आप सब कुछ यहाँ पर लेबर ऑन साइड. अब आप देखो यहाँ पर कैसे बनाते हैं. जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है ना, जो डेबिट साइड, वो सारी चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसेस हो गए जो भी एक कॉन्ट्रैक्टर. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो तो आप ऐसे बना रहे हो उसको, आप खुद अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर कंसीडर कर रहे हो, उसके बेसिस पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बनाओ, इट विल ईजियर फॉर यू. अब जो डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस और रिसोर्सेज ले रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर गैदर करता है, और क्रेडिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस और एसेट्स ले लेते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर को गेन होता है कॉन्ट्रैक्ट से. ठीक है, वो क्रेडिट साइड लेते हैं. तो यहाँ पर आप ये देखो कि labor on site, material direct to cost, material from stores, hire and use of, these are the thing that is there, that is kind of expenses of the contractor. ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टर पुट दीज थिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लगा रहा है. तो आप देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन. आप जाके एक बार पोस्ट करके क्वेश्चन देख सकते हो, रीड कर सकते हो, सब कुछ है. अब बस आपको यू जस्ट मेक श्योर कि डेबिट साइड आप वो सारे एक्सपेंसेस लोगे और क्रेडिट साइड आप लेते हो जो कि प्रॉफिट है, दैट इज समथिंग प्रॉफिट द कॉन्ट्रैक्टर अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आता है. अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, मटेरियल इन हैंड, ये हम एसिड है इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिया है. और उसके बाद वेजेस वर्क इन प्रोग्रेस. आपको ध्यान रखना है वर्क इन प्रोग्रेस सेक्शन में 3 चीज़ें आती हैं टिपिकली, बट इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें हैं, दैट इज सर्टिफाइड वर्क, सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क. सर्टिफाइड वर्क 11 लाख क्वेश्चन के अंदर गिवन है और अनसर्टिफाइड 16,500 भी गिवन है. अब जब हमने सारी चीज़ें करेक्ट प्लेस पे पुट कर लेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, जब आप इसको बैलेंसिंग करोगे तो आप देखोगे कि अगर देखो डिफरेंस, डेफिशिएंसी डेबिट साइड आती है तो नोशनल प्रॉफिट होता है, डेफिशिएंसी क्रेडिट साइड आती है तो नोशनल लॉस होता है. तो यहाँ पर इस केस में डेफिशिएंसी डेबिट साइड आई है, सो दिस इज गोइंग टू बी नोशनल प्रॉफिट जो कि 1,35,000 है. अब ट्विस्ट 1,35,000 रुपये को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है. ठीक है, 1,35,000. अब इसको बाइफरकेट करना है 2 में. सब कुछ पार्ट तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ पार्ट जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में. अब आते हैं कि कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू गाइज नो कि कितना हमें पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है. तो उसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट पे लेके चलती हूँ. पहली बात तो हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना होता है, जिसके लिए वर्क सर्टिफाई डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100. अब इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ क्वेश्चन पे आगे दोबारा से. आप देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, 15 लाख. ठीक है, और हमारा जो वर्क सर्टिफाई है वो है 11 लाख. ठीक है जी, अब देखो आप पुट कर लो फॉर्मूले में, यू विल फाइंड आउट कि जो परसेंटेज है ना 73.3% समथिंग है. अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा यहाँ पर, जब भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50 से 90% के इन बिटवीन रहता है ना, तो आप नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 2/3 और इंटू जितना कैश रिसीव हुआ है आप उसको भाग कर देते हो वर्क
सर्टिफाई से, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर सेम एग्जैक्टली यही किया है। और आप ये देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,000 आएगा। अब ऐसे ही सपोज कि अगर वर्क सर्टिफाई है 25 है, कुछ 25, तो 25 में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। अगर 25 से 50% के इन बिटवीन डिग्री ऑफ कंप्लीशन आता है तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। अब विल गेट टू नो कि प्रॉफिट एंड लॉस में 72,000 आएगा। अब आप देख लो 72,000 को आप इससे घटा करोगे 1,35,000 से, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व कहलाएगा, जो कि है 63,000। ठीक है। एंड अब हमें क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी गिवन था। ये बहुत ईजी है, इसमें भी हम जस्ट क्रॉस पोस्टिंग करना होता है। कॉन्ट्रैक्टी को जितना कैश रिसीव हुआ है वो क्रेडिट साइड आएगा। कैश इसको कितना रिसीव हुआ है हमने देखा था ना, 8,80,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को वापस करना पड़ गया था। कॉन्ट्रैक्टी को वापस करना मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्टी के लिए तो ये बेनिफिट उसके पास अमाउंट आई ना, तो बाय कैश करके आप दिखाओगे, यही बैलेंस CD हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा डेबिट साइड। और ये इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, और वैसे भी जनरली अगर बनाने के लिए आएगा एग्जाम में आएगा ही, तो ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत इजी होता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना। एंड दिस इज द बैलेंस शीट एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वन, दिस विल नॉट टैली, ये टैली नहीं होती और ये एक्सट्रैक्ट है, बिल्कुल रियल बैलेंस शीट की तरह ही काम करता है, लेकिन हम इसको टैली नहीं करते। इसके अंदर आप टॉपिक लाइक फैसिलिटीज़ रूल्स वही हैं जो नॉर्मल बैलेंस शीट के होते हैं। आप अक्रूड जो भी है वेजेस और डायरेक्ट वेजेस सारी अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। और जो भी आपको अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्क इन प्रोग्रेस सेक्शन। वर्क इन प्रोग्रेस से जो भी सर्टिफाई अनसर्टिफाई क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे, ऐड करोगे, इसमें से आपको वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व माइनस करना होता है कैश रिजर्व। कैश जितना रिसीव हुआ है किसको, कॉन्ट्रैक्टी को, मतलब कैश रिसीव टू कॉन्ट्रैक्टी, वो कैश रिसीव टू कॉन्ट्रैक्टी मतलब जितना कैश कॉन्ट्रैक्टर को वापस करना पड़ेगा, जो वर्क सेटिस्फाई नहीं कर पाया वो जिस भी पोर्शन तक कॉन्ट्रैक्टी को, वो उसको वापस करना पड़ेगा, वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। 8,80,000 रुपये ये था, तो आप देखोगे कि 1,73,500 समथिंग कुछ आएगा। और देखो ये तो एसेट है, मटेरियल इन हैंड, वो आएगा 6300। और यहाँ पर भी अच्छा ये जो पोर्शन था प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बैलेंस शीट के डेबिट साइड जाता है। ये वाला जो पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस 72,000 रुपये, ये बैलेंस शीट के डेबिट साइड जाता है। और जो वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व है ये बैलेंस शीट में जो वर्क इन प्रोग्रेस है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं रिजर्व वाला पार्ट। ओके, आई होप you will getting by now the topic, and this is a very easy question and these question will ask, so you give that much time. Thank you so much. I am ending this lecture, and please do like, subscribe the video, please do like and subscribe to our channel as well. Do like our Facebook page, I will put the link in the description box. And thank you so much, we'll meet in the next video. Have a nice time.